अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बिस्मा हूँ। आई वर्क इन स्किम्स। तो यहाँ हमने आज वुमेंस कॉलेज में वी ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। तो यहाँ हमने टारगेट किया है इस यंग पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स को, जिनकी हमने स्क्रीनिंग की और जिनको हमने अवेयर कराया कि घर पे हाउ कैन दे डिटेक्ट द अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट ताकि हम टैबूज तोड़ पाए, सो दैट पीपल कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट ब्रेस्ट हेल्थ एंड द साइंस एंड सिम्टम्स जो पहले ही आते हैं उनको हम कैसे पहले अर्ली डिटेक्ट करें और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैसे हम लें। Symptoms are very basic. You encounter primary changes on, if you just stand in front of the mirror and you examine your breast, size में difference मिलेगा, skin में puckering, ulceration, nipple discharge, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. And then when you start palpation, then you can encounter certain lumps in the breast or in the axillary region. So these are the small things that we can examine at घर पे ही, और उसके बाद we can take advice from a medical practitioner. Precautions के लिए it's usually in the genes, and also common precautions from the carcinogens जो commonly है सोसाइटी में, और जो सब कैंसर्स की प्रिवेंशन है, those are safe for the breast cancers. देखिए, lifestyle modifications are good for everything आजकल. If you inculcate, आप एक active lifestyle को inculcate करेंगे अपनी life में, that is better for you. And staying away from those foods जिनमें excessive, जिनमें for example कोई suspected carcinogen है, या कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स जो हम यूज़ करते हैं which are not safe. In India, every year 90,000 women die of breast cancer, and it is the most commonest cancer in the women in India. मैं प्रोफेसर अंजू मलिक हूँ, स्किम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से, प्रोफेसर ऑफ OBGYN। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स पे बहुत अब स्ट्रेस किया जा रहा है, ऑल टाइप, चाहे वो गट का मेलिग्नेंसी हो, ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी हो, यूट्राइन हो, सर्वाइकल हो, ओवेरियन हो। स्क्रीनिंग प्रोग्राम से हमें ये है कि उससे इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ हैज़ डिक्रीज, मतलब जितने पेशेंट्स एडवांस डिजीज़ में जाते थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो अगर बच्चे को या लड़की को या लेडी को पहले ही पता चले कि मेरे साथ कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है मेरी ब्रेस्ट में, तो वो जल्दी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कर सकते हैं। इवन दो अगर वो फिर बिनाइन ही निकले, मतलब जो नॉन मेलिग्नेंट हो, जो खुदा न खासा कैंसर ना हो, वो बेटर रहता है। पहले अवेयरनेस होना बेटर है रादर देन कि बाद में डिजीज़ जब प्रोग्रेस हो गई हो उसके बाद पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है। सिम्टम्स बहुत रहते हैं, यूजुअली इसमें बिनाइन डिजीज़ भी होती हैं। जो जिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम आज एड्रेस करेंगे उनको यूजुअली बिनाइन ही होता है, रेयरली किसी को इस एज ग्रुप में कैंसरस डिजीज़ होगी। तो इसमें बहुत सारी और भी है, जैसे लंप है, वो लंप कैसा है वो हम अभी अपने प्रोग्राम में आपको बता देंगे कि किस किस टाइप के लंप्स ऑमिनस होते हैं, मतलब जो ख़तरनाक हो सकते हैं, वो कौन से बिनाइन हैं जिन पे इंसान डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए बट दे शुड नॉट गेट स्केयर्ड। डरने की बात नहीं होती उसमें। प्रिकॉशंस है, एक तो पहले जैसे आजकल है, हमें जो जंक हम अवॉइड करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, वो करना है। वेयरिंग प्रॉपर सपोर्ट, ब्रेस्ट सपोर्ट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड अगर किसी की फैमिली में ऑलरेडी हो, सो दे हैव टू बी मोर केयरफुल। कि ये जो ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कम्युनिटी बिकॉज द ब्रेस्ट इश्यूज, स्पेशली द मैलिग्नेंसीज ऑफ द ब्रेस्ट, दे आर फास्ट ग्रोइंग इन आवर वैली. तो वी शुड बी अवेयर, वी शुड अवेयर आवर फीमेल्स what is this problem, how you will detect early and by self examination of breast. You should come to the clinics, you should examine to the physician surgeon so that we can see what is the problem at early. Once we detect and there is good prognosis, it is not necessary it will be malignancy, it will be simple benign disease, so that we can handle it early, we can assure the patient, especially for those females, for those female folk who have family history of malignancy. They should, any time they will see any finding in their breast change or anything, they should come and consult the doctor. These programs are very important because the females who are in far-flung area, they did not find these problems early, they are
shy of showing any male physician or surgeon, they should come us. We are here in the SKIMS Medical College. We are there two females. I have my OPD on Thursday and Saturday. I am already seeing these female patients, female folk more. Whosoever has female problem and these breast problems, they should come. Especially far-flung areas, these programs should happen everywhere. It cannot be undone. So as young women, you all should. It is a step towards building informed communities where women examination. I sincerely thank SKIMS Medical College for partners who will guide us today through scientific knowledge and practical demonstration. I encourage every participant students the knowledge that can help and save us. I once again warmly welcome all of the respected guests. It is now our respected principal ma'am, Professor Dr. Yasmin Farooq, has always inspired initiative promoting the holistic development. Again, we had a wonderful induction program for our first semester students yesterday. Today we are here for another breast cancer awareness program conducted, and I am delighted and honored to see. It is indeed wonderful that a department like the higher education department collaborates with the healthcare, tertiary healthcare of our division. Idea that we care for the, that is paramount, because we believe in having students who are actually empowered in the real sense of the word. In one day we cannot actually change things. Be a small game changer, because the students today, what I said yesterday, whatever you do in life, do it with a sense of passion. That your academics. How are you going to transact your extracurricular activities during the is conducted and concludes with a thing. A public health problem which is a challenge to the whole world in general, but to our state, to our UT in particular. That is the increased trend of carcinoma breast, or in other words, we call it as breast cancer, which is increasing at a very alarming rate. Now, Indian Council of Medical Research, through FOMH, that is the Ministry of Health and Family Welfare, they issued a notification for the starting project in all over the states of the country regarding breast awareness and screening, and our college at SKIMS Medical College is also one of the stakeholders in that. I am the principal investigator in that program with my co-investigators also. Earlier on, there would be very rare cases, but now with a technical person as far as medical is concerned, but I would like to tell all my students that